Chief guest and our guest of honor. We would also like to invite on stage our esteemed dignitaries, Shri Jerry Agnes, CEO CG SEMI. We would like to invite Shri Bhupendra Patel, Srimati Bharti P, DST Gujarat, Srimati Mamta Verma. Welcome. Shri Sushil Pal, JS ISM, Shri Kanubhai Patel, Honorable MLA Anand. It's indeed our pleasure to welcome all of you. Thank you all the esteemed dignitaries for gracing this wonderful event. We would like to welcome each one of you. Jerry Agnes, the CEO of CG SEMI, we welcome you. Shri Bhupendra Patel, VP Renaissance, we welcome you. Srimati Bharti P, DST Gujarat, we welcome you. Srimati Mamta Verma, we welcome you. And we welcome our chief guest of the evening, Shri Bhupendra Patel, Honorable Chief Minister of Gujarat. Also, we welcome Honorable Union Minister for Electronics and IT, Railways, Telecom and IB, Shri Ashwini Vaishnaw ji, and also the Honorable Industries Minister of Gujarat, Shri Balwant Singh ji Rajput. It is indeed our pleasure to welcome all of them. We welcome Shri Girish Chaturvedi, Chairman, CG SEMI, and Shri Vilayan Subaya, Chairman, CG Power. Thank you. Ladies and gentlemen, let us greet them all with a resounding round of applause as they grace the stage. Thank you. Thank you, Honorable Chief Minister, sir, and Honorable Union Minister, sir, and Minister, sir, for your gracious presence. Your vision and leadership illuminate this occasion and inspire all of us to move forward with determination. Foremost, we would now like to move on with a felicitation. I request Vilayan Subaya Chairman, CG SEMI, to kindly welcome Honorable Chief Minister Shri Bhupendra Patel with a memento. A beautiful memento with the emblem. I now request Shri Girish Chaturvedi Chairman CG Power, to kindly welcome Honorable Union Minister Shri Ashwini Vaishnaw ji. I now request Shri Jerry Agnes, CEO, CG SEMI, to welcome Honorable Industries Minister of Gujarat, Shri Balwant Singh ji Rajput. Thank you very much. Now, to set the tone for this grand evening, I now invite Shri Girish Chaturvedi, Chairman, CG SEMI, to deliver the welcome address.
Honorable Chief Minister Shri Bhupendra Patel ji, Honorable Union Minister Electronics, Information Technology, Information Broadcasting and Railways Shri Ashwini Vaishnaw ji, esteemed dignitaries from government and industry, our JV partner, customers, media representatives and distinguished guests, a very good evening and a warm welcome to all of you. Today marks a historic milestone for CG Semi and for India's semiconductor journey with the inauguration of our first OSAT facility here in Sanand. We take a decisive step towards building semiconductor sovereignty for our nation. This is not just about creating a facility, it's about creating confidence that India can deliver world-class semiconductor solutions at scale. This achievement reflects the vision of our Honorable Prime Minister and the strong support of the Government of India, the Government of Gujarat, MITI, India Semiconductor Mission and GSEM. Your encouragement has been instrumental in turning this vision into reality. CG Semi is proud to be among India's first full-service OSAT providers, offering end-to-end solutions across both traditional and advanced packaging technologies. None of this would have been possible without the collaborative effort of our partners, Renesas and Star Microelectronics, and the dedication of our team. As we move forward, our commitment is clear: to make CG Semi a trusted global partner, to build cutting-edge semiconductor packaging capabilities in India, and to contribute meaningfully to the Atmanirbhar Bharat vision. Thank you for joining us to celebrate this defining moment for India's semiconductor future. I warmly welcome you again. Thank you very much. Thank you very much, Shri Girish Chaturvedi ji, for your warm and thoughtful words of welcome. Your message truly reflects the spirit of collaboration and progress that this initiative stands for. It is being said in our culture that light dispels darkness, just as knowledge drives away ignorance. And today, we are about to start a beautiful beginning. So that also, to have the new hope, I request our esteemed dignitaries to kindly step forward for the lamp lighting. Shri Bhupendra Patel ji, Shri Ashwini Vaishnaw ji, Shri Balwant Singh ji Rajput, Shri Vilayan Subaya, Shri Girish Chaturvedi, and all the esteemed dignitaries are requested to join for the lamp lighting. I know the flow. Thank you all our dignitaries for lighting the lamp of knowledge, progress and good wishes. This sacred ritual marks the auspicious beginning of today's journey. Ladies and gentlemen, this is a defining moment as CG Semi unveils one of India's first end-to-end OSAT facilities right here in Sanand, Gujarat. We are not just inaugurating a plaque today, but taking a historic step towards India's chip sovereignty and the vision of Atmanirbhar Bharat. May I now request our Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Patel, and our Honorable Union Minister for Railways, Communications and Electronics and IT, Shri Ashwini Vaishnaw ji, to kindly press the button and inaugurate this landmark CG Semi facility.
3, 2, 1, go. Last year, India chose a bold path, not just to consume semiconductor chips, but to manufacture them. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की सफलता के लिए जरूरी है कि हम भारत में स्ट्रॉन्ग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का निर्माण करें। भारत सरकार द्वारा अप्रूव्ड सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को अपने आप ही गुजरात में अप्रूवल मिल जाती है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। हर वो चीज जिसको ऑन या ऑफ किया जाता है उसमें सेमीकंडक्टर लगता है। Today, India's emergence in the modern economy and an announcement of India's arrival on the global semiconductor stage. From now on, we will design for Bharat. We will make for Bharat. We will build Bharat. In Gujarat's heart, a quiet revolution began. What was once an empty patch of land is now a national landmark in our semiconductor journey. At the Sanand site, there are two facilities. The first is among the very first world-class end-to-end OSATs in India, brought to life in a record time of less than a year with more than 150 million units capacity. Next, we are committed to build a facility with over 10 lakh square feet of built-up area and a capacity of more than 4 billion units. Both facilities have been engineered to operate for more than half a century with zero liquid discharge, 70% plus recycled water and full backup utilities. Here, semiconductor wafers come to life. Grinded, diced, attached, bonded, encapsulated, tested and packaged. From industrial, automotive, infrastructure to IoT, this is the final step in the semiconductor value chain. With a fully digital, automated backbone, every process is traceable, every movement optimized to meet global quality standards. Every chip we produce will carry the stamp of India's ambition and ability. From Sanand to the world, we will show what Indian engineering can deliver. Semicon is the fourth revolution of the world. Better join in semicon industry. Better join in CG. Make in India for the world. भारत में बना देश के लिए. We are ready. We are ready. This ambitious project has been made possible by the visionary leadership of our Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, and the pioneering semiconductor policy by ISM, GSCM and MAPE. We extend our people's gratitude for their faith in our vision. Many, many congratulations. Thank you to our honorable dignitaries for unveiling the plaque and sharing this proud moment with us. The audio-visual we just witnessed reflects the hard work, dreams and possibilities that lie ahead. Moving ahead, may I now invite Srimati P. Bharti, Secretary DST, to kindly address the gathering. Welcome, Madam. Good evening all. Today we are deeply honored to have with us Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Patel, Shri Ashwini, Vaishnaw, Honorable Union Minister, Railways and Information Technology, Broadcasting and MATI, Shri Balwant Singh Rajput ji, Honorable Minister of Industries, MSc, Government of Gujarat, respected Mamta Ma'am, Principal Secretary Industries, Shri Sushil Pal, Joint Secretary MATI,
Shri Vellavan Subbaya ji, Chairman CG Power, Shri Girish Chaturvedi ji, Chairman CG Semi, and all respected dignitaries on the stage. It is a privilege to be here today for Prarambh, the inauguration of CG Semi's pilot OSAT facility in Sanand. I extend my warm congratulations to Mr. Vellan Subbaya ji, Murugappa Group and CG Semi, Renaissance Electronics Corporation, Stars Microelectronics, and to all partners whose efforts have made this possible. Driven by the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Government of India has launched several impressive policy initiatives under the Semi-India program. Gujarat, under the dynamic leadership of Honorable CM Saab, is fully aligned with this vision and creating a world-class ecosystem. All of you know Gujarat is the first state in country to announce a dedicated semiconductor policy. Then Gujarat State Electronics Mission is a nodal agency in the state. This facility makes an important milestone in this ecosystem to bring the state-of-the-art OSAT facility a critical part of the semiconductor value chain. The state's proactive governance model, transparent decision-making, policy-driven approach, ease of doing business initiatives ensure that companies not only set up faster but also scale globally with confidence. And Department of Science and Technology, Government of Gujarat is fully committed to this sector, and together with initiatives like this OSAT facility, we are moving closer to Make in India, Make for the World. Let me once again congratulate CG Semi for this important achievement. I am confident that Sanand OSAT facility will become a symbol of India's growing capability, self-reliance, and trusted contributions to global semiconductor supply chains. Thank you so much. Thank you, Madam, for your insightful words. Your vision for science and technology strengthens our collective resolve to make India a hub of innovation. May I now take an opportunity to invite Shri Sushil Pal, Joint Secretary, MeitY, to share his address with us. Welcome, sir. Thank you. Honorable CM of Gujarat, Honorable Minister of Electronics and IT, Honorable Minister of Industries, Government of Gujarat, dignitaries on the dais, distinguished guests, ladies and gentlemen. It's a privilege for me to be present here today for the inauguration of a CG Semi pilot facility, a milestone not just for the company but for India's technological journey, particularly for the semiconductors, which is supposed to be the heart and the backbone for the modern economy and the modern technology. This project is not merely an industrial project. This represents a decisive step towards the strengthening of India's self-reliance and resilience. We are familiar with the supply chain shocks which countries face today in the fast-changing geopolitics. By nurturing indigenous capacities with projects like these, India is not only insulating itself from these vulnerabilities, but also positioning itself as a reliable supply chain partner globally. CG Semi has taken lead among other approved applicants in launching its pilot facility. It has also taken lead over other players, I must say, in participating in the larger value chain of chip design. And with Axiro, I think as Mr. Vallian was seen in the video announcing that they are actually designing the chips for the world for the 6G, 5G, SATCOM and many of the industrial IoT products as well. I congratulate Mr. Vallian for his vision, courage of conviction, execution, which also demonstrate his group's confidence and belief in the government's policy and India's manufacturing journey. I must emphasize also the critical role of policy and the leadership provided by the central government and the government of Gujarat. The energy and the enthusiasm which we witnessed today among the industry players in this sector has been made possible due to the enabling policies which has been designed under the guidance and the close supervision of our Honorable Minister of Electronics and IT. We are driven by his mantra of industry consultation and simplification of the procedures. His presence today is a testament to the government commitment, unwavering commitment for this sector.
Under the leadership and guidance of the central and the state government, industry has witnessed unprecedented support from the policy framework for the incentive to the various ease of doing business measures to the infrastructure development and the talent development. Such a public-private partnership is a true enabler of India's semiconductor milestone. Inaugurations like this today are not merely ceremonies. These are statements of India's intent, an intent to be self-reliant, an intent to be technologically advanced, and an intent to be globally competitive. And with a joint resolve of the government, industry and academia, we are confident that India will emerge not just as a participant, but as a leader in the semiconductor sector. With that, I again extend my best wishes. Thank you so much. Thank you very much, Mr. Sushil, for your valuable perspective. Your address has highlighted the opportunities that lie ahead in the electronics and IT ecosystem. It is now my privilege to invite Shri Vilayan Subbiah, Chairman CG Power, to deliver his remarks. Welcome, sir. Namaskaram. Honorable Chief Minister Shri Bhupendra Patel ji, Honorable Minister Shri Ashwini Vaishnaw, Honorable Minister Shri Balwant Singh, and all the other dignitaries from government and industry, our customers, our JV partners, media representatives, colleagues, and dear friends. Namaskaram. History has taught us that one bold beginning can redefine destiny. Edmund Hillary and Tenzing Norgay were the first people to climb Mount Everest. For decades, many had tried and failed, but in 1953, they became the first humans to reach the top. In the years that followed, a few more made the climb. What once seemed impossible slowly became possible because the first climbers showed the way, left their marks, and gave others a path to follow. Today, thousands have reached the summit. But it all began with the first two who dared to take that first step. For India, becoming relevant in the semiconductor industry has been a challenge just as steep as climbing Mount Everest. It gives me great pride that we at CG Semi have taken that first step. Many have questioned India's ability to become self-reliant in semiconductors. This facility represents more than a milestone for me, more than a milestone for CG. It is a national milestone. It shows how government and industry can come together with conviction, capital, and scale to achieve the vision set by our Honorable Prime Minister. Every chip we make here is a step towards India's technological sovereignty. Today, however, is just the beginning. The road ahead is long, and to build on this launch, three things are required. First, industries must support each other and embrace domestically made chips. As India's demand grows, whether in consumer electronics, automobiles, or appliances, we must start moving towards making chips and using chips that are made here in India. Our companies should begin by backing what's built locally, just as Chinese companies did. When their industries supported their own ecosystem, it gave them the scale to then supply the world. If we do the same, India too will not just meet our own growth needs, but also become a truly global supplier. Second, we must develop Indian talent and bring Indians back. India is blessed with abundant intelligence, ingenuity, and determination. 20% of the world's semiconductor engineers worldwide are Indians. Many Indian students and professionals succeed abroad. If we look at China, their Ministry of Education claims that over 85% of Chinese students studying abroad return home. We need this in India as well.
At CG Semi, we are committed to nurturing and developing homegrown talent. We've already hired a strong batch of graduate engineer trainees from local Gujarat colleges, and about 50 of them have already been sent for intensive training at our partner facilities abroad. They come back with not just technical know-how, but with the confidence and exposure needed to carry forward India's semiconductor journey. And alongside this, we pledge to welcome back Indians who have studied or worked abroad, because each returnee brings experience, exposure, and ideas that strengthen our ecosystem. Third, we must invest in R&D to become global leaders over time. True technological independence requires more than assembly. It demands design, intellectual property, and innovation. India must invest deeply in R&D. This means collaboration between industry, universities, and government labs to design chips, design firmware, and secure patents. Over time, we aspire not simply to produce semiconductors, but to be amongst the leaders shaping next-generation technologies. Today is about pride. Today is about confidence. Today is about CG Semi's Praram. And above all, it is about India's Praram. At CG Semi, our role is not that of conquerors, but that of seekers, laying foundation stones so that many others can rise with us, after us. This is the beginning of a journey that will define India's future in technology. Here's to a rising India. Jai Hind, Pranam. Thank you, Mr. Valen Subaya, for your inspiring words. Your leadership and commitment continue to drive progress and strengthen India's position globally. હવે હું આદરપૂર્વક આમંત્રણ આપું છું ગુજરાત રાજ્યના ઉદ્યોગ મંત્રી માનનીય શ્રી બળવંતસિંહજી રાજપૂતને કે તેઓ પોતાના આશીર્વચનોથી આપણને સૌને પ્રેરિત કરશો. વેલકમ સર. सीजी सेमी प्राइवेट लिमिटेड के आज के उद्घाटन अवसर पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, मेरे साथी विधायक श्री कन्हूभाई पटेल, सीजी पावर के चेयरमैन वल्लभराव जी, विभाग के सचिव श्री, उपस्थित गणमान्य व्यक्ति, विशिष्ट अधिकारीगण, सीजी सेमी के साथ जुड़े हुए उद्योगपति, अतिगण, पत्रकार मित्रों, भाइयों, सर्व बहनों, सभी को नमस्कार। आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सीजी सेमी कंडक्टर का खातमुहूर्त 13 मार्च को हुआ था और आज 1.5 साल के बाद प्लांट का प्रारंभ हो रहा है और इस दोनों अवसर पर उपस्थित होने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। मुझे बताते हुए इस बात का गौरव है कि गुजरात अब सेमीकंडक्टर का हब बन चुका है। गुजरात की बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के मार्गदर्शन में गुजरात के विकास की नई ऊंचाइयों पे पहुंचा है। साल 2003 में शुरू की हुई वाइब्रेंट गुजरात की विकास यात्रा को राज्य के सामाजिक, आर्थिक एवं रचनात्मक और औद्योगिक परिस्थिति का क्रांतिकारी बदलाव हुआ है। आज के देश की जीडीपी में 8.2, उत्पादनों में 18% और नियत में 33% और कार्गो माल परिवर्तन में 39% की हिस्सेदारी के साथ गुजरात का मैन्युफैक्चर हब, रोल मॉडल और आदर्श राज्य बना है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब के नेतृत्व में गुजरात के 20 से अधिक विशिष्ट नीतियों, पारदर्शिताओं, व्यवस्थाओं, सिंगल विंडो सिस्टम और व्यापार के सम्मुख के माध्यम
निवासी उद्योगपतियों को पर्यटनों का विश्वास जीतने में सफलता प्राप्त हुई है। राज्य के सड़क, रेलवे, बंदरगाह और हवाई सेवाओं तथा ऊर्जा के सर्व सप्लायों और विश्वसनीय आधार पर रचनात्मक सुविधाओं में राज्य में उद्योग का विकास की नई आदान प्रदान के लिए इस परिणामों में 500 की बड़ी कंपनियों में से 100 फैक्चरिंग कंपनियों आज गुजरात में कार्यरत है। गुजरात आज रक्षा उत्पादन, सेमीकंडक्टर, एआई जैसे नए क्षेत्रों में विकास दर कर रहा है। जब भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में मैन्युफैक्चर का हब बनने और अग्रसर में गुजरात पीछे नहीं रहेगा। मानव जीवन की सभी क्षेत्रों में स्मार्ट गैजेट प्रवेश कर चुका है। हमारे घर, कार्यालय, खेलकूद, परिवहन, स्वास्थ्य, ऊर्जा, सुरक्षा और लोक प्रशासन और टेक्नोलॉजी माध्यम में सेमी कंडक्टर का आज मानव के मूलभूत आवश्यकता बना हुआ है। उसमें हमारा समय और श्रम बचता है। गुजरात ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने में अग्रसर भूमिका कार्यरत है। गुजरात के डिजाइन, निर्माण और सहयोग और परिषद के तक एक संपूर्ण इकोसिस्टम विकसित करने के कदम उठाए हैं। 3 महत्व के चरणों में, जैसे उद्योग के विकास, रोजगार का सृजन और इकोसिस्टम का निर्माण हब रहेगा। आज सानन, धौलेरा उसमें विकास के लिए महत्व स्थान बढ़कर उभरे जा रहा है, जहां ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, चिकित्सा और उपकरण और इंजीनियरिंग जैसे उद्योग है और अब सेमीकंडक्टर का भी हब के तरफ पहल कर रहे हैं। आज गुजरात के विकसित गुजरात में विकसित भारत के और अटल पहल है। हम सभी इस यात्राओं में मिलकर विकास करना है। आज इस अवसर पे सभी को मेरी शुभकामनाओं और बधाई। धन्यवाद। माननीय मंत्री श्री, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रोत्साहनपूर्ण शब्दों के लिए। We now invite Honorable Union Minister Shri Ashwini Vaishnaw ji to deliver his address, a leader who has transformed India's vision in electronics, IT and infrastructure. Welcome, sir. जब प्रारंभ करते हैं तो पहले भारत माँ की जय तो बोलना है। भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही शुभकामनाएं, अभिनंदन और विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा मैं गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी को। जिस तरीके से आपने काम किया सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स के, अभी तो हाल ही में इनॉग्रेशन, फाउंडेशन की बात थी और आज प्रारंभ। जब प्रारंभ भी इतना अच्छा है तो आगे आने वाला समय कितना अच्छा होगा। खूब झड़पती काम करिए। बहुत अच्छा आपने काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मंत्री भाई श्री बलवंत सिंह राजपूत जी को। बहुत आपने भी एक एक स्टेप पे सहयोग दिया और हर कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो आपने सॉल्व की। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गुजरात की पूरी टीम को, टीम गुजरात को। What an efficient team it is. Extremely good team. Give them a very big round of applause. बहुत अच्छे से काम करते हैं। Secretaries work like CEOs. That's the way it should be. बहुत ही बढ़िया। और विलायन जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। The way you executed this project, it's really an amazing feat. साथियों, ये एक देश का बड़ा ड्रीम है। भारत में सेमीकंडक्टर डिजाइन हो, भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर हो और सेमीकंडक्टर के बाद में डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज में उसका उपयोग हो। लंबे समय से ये ड्रीम था। इस ड्रीम को पूरा कर पाए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि उनका एकदम स्पष्ट विजन, फोकस्ड एग्जीक्यूशन और एकदम एक पॉइंट पे
किस तरह से आगे बढ़ना है, क्लियर मार्गदर्शन। आज उसके कारण हम यहां पर देख रहे हैं कि सीजी पावर का पायलट लाइन, सीजी पावर का पायलट लाइन प्रारंभ आज यहां से इनॉग्रेट हुआ और बहुत जल्दी इस पायलट लाइन से निकली हुई चिप माननीय प्रधानमंत्री जी देश को समर्पित करेंगे। वेलायन जी कब तक कर लोगे? बाय व्हाट टाइम? वीक्स टाइम? बिफोर दैट? आई एम गोइंग टू पुश हिम वेरी हार्ड नाउ। And when the boss is being pushed hard, I think the team knows what's going to happen to you, right? कौन है सीजी के लोग यहाँ पर? कितने लोग हैं सीजी? टीम सीजी? Loud shout out for प्रारंभ। ये हुई ना बात? और तेज। ये तो नैनोमीटर वाला था, किलोमीटर वाला शाउट आउट होना चाहिए। और तेज। ये भी ना बात, दम तो है आपकी टीम में। साथियों, पायलट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पायलट लाइन में वॉट एवर प्रोडक्शन वी डू दैट विल बी यूज्ड फॉर क्वालिफाइंग टू द कस्टमर्स, एंड वंस द चिप्स आर क्वालिफाइड then it becomes very important, very easy for the commercial plant to start production of those qualified products. That's why this pilot line was very important. This is a major milestone in our country's semiconductor journey. I also visited the nearby Micron plant. The construction is going on at very good pace. The Keynes plant also construction is going on at very good pace. And few weeks back, about a month back, I had visited Dholera. There also the construction work is going on at very good pace. Overall, out of the 10 projects that we have approved in the semiconductor mission, very happy to report to all that this is a dream getting fulfilled, something which all of us wanted ever since. For last many decades, we have wanted this to happen in our country, and finally that dream is now getting fulfilled. I have one very interesting thing to share with all of you. As a part of our semiconductor mission, one of the major objectives we took was to develop a talent pipeline. Talent pipeline के लिए छोटा मोटा नंबर नहीं लिया, बड़ा टारगेट लिया, और उसका रीजन है globally by 2032 there will be a shortfall of about 1 million semiconductor talent. That's what the experts predict. So we have that opportunity to fulfill that large gap which is clearly visible to everybody globally. So we partnered with 270 universities, and gave some of the most latest tools to these universities, tools from Siemens, from Cadence, from Synopsys. Practically every important tool we have given to these universities. And what I want to share with you is that the students have made such a good use of it. In 2025 itself, 1.2 crore hours of usage has happened, and the result is total 20 chips designed by 17 institutions have now been taped out at a semiconductor laboratory in Mohali. Imagine कॉलेज के स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स चिप डिजाइन करना और उस चिप को मैन्युफैक्चर कर पाना। दुनिया में बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं जो इस तरह का क्लेम कर सकती है, और दुनिया में बहुत कम देश है जहां पर इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को लेटेस्ट मॉडर्न सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन टूल्स अवेलेबल है, वो उसको यूज कर रहे हैं, यूज करके चिप्स डिजाइन कर रहे हैं,
और चिप्स डिजाइन करके उनको मैन्युफैक्चर भी देश में कर पा रहे हैं। बहुत बड़ी ताकत बनने वाली है भारत के नौजवानों की, बहुत बड़ी ये स्ट्रेंथ बनने वाली है भारत की पूरे टेक्निकल इकोसिस्टम में। और ये विजन है प्रधानमंत्री जी का, जिस विजन के कारण आज भारत एक उभरता हुआ सेमीकंडक्टर हब बन रहा है। और इसमें गुजरात का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि गुजरात ने सबसे पहले सेमीकंडक्टर पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी के साथ साथ उसका बहुत रैपिड एग्जीक्यूशन भी किया। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं और इस बहुत शुभ अवसर पर कंप्लीट सीजी टीम को, आईएसएम टीम को और गुजरात टीम को बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। Thank you, Honorable Minister Sir, for your good wishes, inspiring words and your august presence. Your words reaffirm our faith in India's capability to lead globally in technology and innovation. ગુજરાતને ઉદ્યોગ, રોકાણ અને વિકાસની વૈશ્વિક રાજધાની તરીકે સ્થાપિત કરનાર અને આજે સેમીકન્ડક્ટર ઉદ્યોગ માટે અનુકૂળ ઇકોસિસ્ટમ ઊભું કરનાર માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને આવો તાળીઓ સાથે આદરપૂર્વક આમંત્રણ આપીએ કે તેઓ ઉદ્યોગ પ્રેરક વિચારોથી આપણને સૌને પ્રેરિત કરે. વેલકમ સર. सीजी सेमी के उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित केंद्रीय रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, मेरे साथी मंत्री श्री बलवंत सिंह राजपूत, यहाँ के लोकप्रिय धारासभ्य श्री कन्हूभाई पटेल, सीजी सेमी के चेयरमैन श्री गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी, सीजी पावर के चेयरमैन श्री विलायन सुबिया, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी सुशील पाल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के सचिव श्रीमती पी भारती जी, उद्योग विभाग के अग्र सचिव श्रीमती ममता वर्मा, सीजी सेमीकॉन के सीईओ श्री जेरी एगेंस, वाइस प्रेसिडेंट श्री वीरेश पटेल, आमंत्रित सर्वे महानुभाव, प्रेस मीडिया के मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। विश्व नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ही बड़ा योगदान है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी रेल, रोड नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दे रहे हैं। आज मैं विशेष रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का प्रति आभार प्रकट करता हूं। कल ही केंद्रीय कैबिनेट की गुजरात के कच्छ के अंतिम छोर तक रेलवे नेटवर्क पहुंचाने के लिए 2526 करोड़ की रेल परियोजना का मंजूर किया है। 140 करोड़ भारतवासियों को पूरा भरोसा और विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी की विजनरी लीडरशिप में भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर रहेगा। वर्ल्ड इकोनॉमी एक्सपर्ट ने अनुसार आने वाले समय में ग्लोबल इकोनॉमी में भारत का योगदान 20% तक पहुंचने वाला है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज ने भी भारत की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया है। भारत की इस आर्थिक विकास यात्रा के मूल में प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का अद्वितीय विजन शामिल है।
उनकी दिशा दर्शन में भारत स्वदेशी टेक्नोलॉजी से आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। इसका एक परिणाम ऑपरेशन सिंदूर में भी दिखा है। भारत में ही बनी डिफेंस टेक्नोलॉजी से हमारी सेना ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन पूरे विश्व के सामने किया है। भारत अब किसी भी डेवलप नेशन के कम नहीं है। ये प्रमाण हमने आत्मनिर्भर और स्वदेशी टेक्नोलॉजी के उपयोग से विश्व को दिया है। सेमीकंडक्टर सेक्टर भी ऐसा ही एक स्पेशल सेक्टर है जिसकी ओर भारत के कदम बढ़ने की हमने कल्पना भी नहीं की थी, पर आज इस सेक्टर में भारत में भारी निवेश हो रहा है। नवंबर 2024 में सीजी पावर के इस सेमीकंडक्टर प्लांट को भारत सरकार से मंजूरी मिली थी। बहुत ही कम समय में सभी जरूरी प्रक्रिया पूरा करके 1 वर्ष से भी कम समय में यह प्लांट आज शुरू होने जा रहा है। एक गौरव की क्षण है हमारे लिए। सीजी पावर के इस सेमीकंडक्टर प्लांट के संचालित होने से आने वाले वर्षों में भारत को सेमीकंडक्टर सेक्टर में ग्लोबल लीडर बनने में मदद मिलेगा, यह मेरा मानना है। इस अवसर पर मैं सीजी पावर ग्रुप के अभिनंदन और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। गुजरात हमेशा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के विजन को साकार करने में अग्रणी रहा है। जब भी प्रधानमंत्री जी ने भारत को विश्व में अग्रिम बनने का आह्वान किया है, गुजरात ने हमेशा उसमें लीड ली है। सेमीकंडक्टर सेक्टर में गुजरात को फ्यूचर रेडी और लीडर बनाने के लिए 2022 में सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य था। श्री मोदी जी के मार्गदर्शन में सेमीकंडक्टर सेक्टर को प्रमोट करने के अपने कमिटमेंट के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और आप सब इसके साक्षी भी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के दिशा दर्शन में भारत सरकार ने गुजरात में 4 सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी दी है। गुजरात देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 4 सेमीकंडक्टर प्लांट कार्यरत होने जा रहा है। गुजरात के प्लांट्स में निर्मित मेड इन इंडिया चिप अवश्य ही भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की प्रेरणा से वाइब्रेंट समिट की लगातार सफलता से गुजरात देश के विकास का ग्रोथ इंजन और गेटवे टू द फ्यूचर बना है। वर्ल्ड की फ्यूचर 500 कंपनी में से 100 से अधिक गुजरात में काम कर रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और स्टार्टअप रैंकिंग में भी गुजरात देश में बेस्ट परफॉर्मर स्टेट है। श्री मोदी जी के विजनरी मार्गदर्शन में राज्य में गुणवत्ता युक्त इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट लॉजिस्टिक फैसिलिटीज और पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस विकसित हुआ है, जिसने गुजरात को बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना दिया है। इस विकास यात्रा में वाइब्रेंट समिट की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब हम इसे आगे ले जाते हुए इस वर्ष वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस रीजनल कॉन्फ्रेंस से स्थानीय स्तर पर छोटे उद्योग को और गति मिलेगी और श्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान को भी प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। इस संकल्प को पूर्ति का मुख्य आधार आत्मनिर्भर भारत है। स्पीड, स्केल और स्कोप ये आत्मनिर्भर भारत के 3 प्रमुख पैरामीटर है। श्री मोदी जी के नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से व्यापार और उद्योग की स्पीड बढ़ी है। युवाओं के लिए टेक्निकल एजुकेशन को सरल और स्किल डेवलपमेंट के मिशन के माध्यम से ग्लोबल स्किल पूल तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री द्वारा रिसर्च को दिए गए प्रोत्साहन से नए नए सेक्टर्स में भी स्कोप भी बढ़ा है। प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व में हमारी आत्मनिर्भरता केवल भारत तक सीमित नहीं बल्कि ग्लोबल चैलेंजेस को भी सॉल्यूशन है। इसीलिए हम सभी आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को आत्मसात कर विकसित गुजरात से
विकसित भारत के निर्माण में आगे बढ़े, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्वदेशी और अधिक से अधिक आत्मनिर्भर टेक्नोलॉजी से सज्ज करे। मेक इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड का हम साथ मिलकर धरातल पर उतारे, इसी अनुरोध के साथ मैं अपनी वाणी का विराम देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रेरणापूर्ण शब्दों के लिए, आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए और आपकी शुभकामनाओं के लिए। Gujarat, under your leadership, has become the land where high-tech industries like semiconductors find their true home, creating opportunities, jobs, and global benchmarks for growth. Now, to formally extend our gratitude, may I now invite Sri Jerry Ignis to deliver the vote of thanks. Welcome, sir. Namaste. Honorable Chief Minister Sri Bhupendra Patel ji, Union Minister Sri Ashwini Vaishnaw ji, Minister Sri Balwant Singh Rajput ji, and all esteemed dignitaries, partners and guests. On behalf of CG SEMI, it is my privilege to welcome you to this historic event, the inauguration of our semiconductor assembly and testing facility in Sanand. We are grateful for the support of Ministry of Electronics, Information and Technology, the India Semicon Mission, the Government of Gujarat, our JV partners, and above all, our employees whose relentless dedication turned vision into a reality. 4 decades ago, as a young engineer, I witnessed a similar beginning in the Philippines. That industry grew to become its largest export. Today, with the same spirit, I believe is India on the cusp of a semiconductor revolution, driven by decisive leadership, strong governance, and world-class talent. Thank you. Thank you very much, Mr. Jerry Ignis, for those heartfelt words of gratitude. Indeed, this evening belongs to each and every person who has contributed to making this vision a reality. Okay, we now move into the next segment. I shall now humbly request our esteemed dignitaries to kindly proceed for the plant visit. And I also request media friends and everyone to kindly proceed along with them. Rest of us, we will keep seated. Thank you. We shall not move unless the instructions are given. Thank you everyone for gracing this wonderful event. Ladies and gentlemen, kindly keep seated. Only the media